Kite
संतों ने हमेशा नाम सुमरन पे ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि संत मत की पहली सीढ़ी सुमरन है, सुमरन को पकाना। जब तक कि सुमरन आपका अच्छी तरह से नहीं चलेगा, तब तक आपका भजन नहीं बनेगा। Saints have always emphasized on the importance of Simran, because that is the first step on the ladder of the spiritual path, and we have to perfect that Simran. कहते हैं कि मन करोड़ों जन्मों से कर्म करते आया है, कर्मों की मैल मन पे चढ़ी है, मन मलिन है, और वो मालिक के नाम के सुमरन से जुड़ना नहीं चाहता है। थोड़ा दिन हमें जबरदस्ती मन को सुमरन से जोड़ना पड़ता है। मन भाग जाता है दुनिया की तरफ, फिर पकड़ के लाए सुमरन से जोड़े, फिर भाग जाता है, फिर लाके उसको जोड़े। इसी को अभ्यास कहते हैं। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो ज्ञान। अभ्यास एक ऐसी चीज है, करते 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 जड़ जीव भी ज्ञानी हो जाता है। So we have to perfect that Simran. The mind has been burdened with karmas for tens of millions of previous lives, and all those karmas do not allow the mind to get associated with Simran. So when we sit for Simran, every time we see the mind pulls us outside in worldly thoughts. But initially in our meditations we have to make that habit of forcing the mind to do Simran. So when the mind defocuses and runs outside, then you have to catch it again and continue to do Simran. And again it runs away, again you do Simran. So that way we have to force the mind to do Simran. Tulsi Sahib has said in his Bani that you have to keep on being at it, and when you keep on being at it, that is, you keep on doing Simran and forcing the mind to come back, then even Jad Sharir or some even earthly person becomes sublime, the mind becomes sublime, something which is not used. जड़ जीव भी पंडित बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। So that way that we are able to refine the mind by doing that Simran. We are able to make it sublime by doing it repeatedly again and again. तो इसीलिए सुमरन बड़ी ऊंची चीज है जो संतों ने दिया है। सुमरन पक गया, थोड़ा सुमरन का रस मन को मिल गया तो मन ही सुमरन से जुड़ जाता है, लेकिन पहले जबरदस्ती करना पड़ता है। So initially we have to force the mind. Once the mind starts tasting the sweet nectar of Simran, then it also starts coming and starts focusing. But initially we have to force the mind to bring it towards Simran. कोई बंगाली बाबू जिसकी कहानी मैंने बताया, खाना सामने रख के बैठ जाते, जब तक मन नहीं टिकता खाना नहीं देते थे, कितना दिन उपवास उठ जाते थे, ऐसे ही ड्यूटी करते थे। तो कहते उनकी कथा है कि शाम को रोज 5 बजे वॉकिंग के लिए जाते थे 2-3 किलोमीटर लाइन के किनारे किनारे रोड पे, रोज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाके आते थे। और एक दिन क्या किया, सुमरन करते निकले और शरीर ही भूल गए और चलते गए रात को 12 बज गए। So we have to force the mind to do the meditation. Like I have given you the example earlier of Bengali Babu. He used to sacrifice his food in order to perfect his meditation, to perfect his Simran. And many a times he had to go hungry as a result. But then he eventually perfected it. There is another story around that, around Bengali Babu, that he used to go for evening walks also. And he would walk by the line, by the railway line on the road, and he would go for about 3-4 kilometers doing his Simran. So once it so happened that while he was doing Simran, it became so strong that he completely forgot the surroundings and forgot about his body, and he kept walking.
So it was late night, 12 o'clock till he had kept on walking doing his Simran. और 12 किलोमीटर दूर जलंधर में पहुंच गए तो बाद में साहब दिखाई दिया, लाइट वेट दिखा, नजर आया तो होश आया। तो एक आदमी कोई कहीं जा रहा था, उससे पूछते हैं कि ये कौन सा शहर है, तो बोलते हैं जलंधर सिटी है। तो आप कहाँ से आए? तो मैं ब्यास से आया। तो बोले अच्छा ट्रेन आएगी रात को? हाँ 3 बजे ट्रेन है, ट्रेन से जाओ। तो बोलते नहीं, जैसे मैं आया वैसे ही चला जाऊंगा। फिर वहां से सुमरन चालू किया और सवेरे 3 बजे 3:30 बजे तक ब्यास पहुंच गए। So like that he kept on walking, and he reached after a few hours he reached Jalandhar city, and when he saw all the lights and all, and he got back on his normal conscious level, he inquired as to where he had reached, and he was told that this is Jalandhar city. Where have you come from? So he said, I have come from Vyas. So that was a long distance away. Now the man suggested that if you want to go back, then there is a train which is due now. You can catch the train and go back. But he said, no, I have come walking and I will go back walking. So like that he went back to Byas walking, doing his Simran, and he reached back by about 3:30 a.m. तो कहते हैं कि सुमरन माने सुमरन में इस तरह से अगर मन लग गया तो शरीर भूल जाता है और मन ही सुमरन से जुड़ जाता है और फिर अपने आप सुमरन चलने लगता है। आप किसी से बात भी करते रहो तो मन सुमरन से जुड़ा रहता है। So that is how once the mind gets intoxicated with Simran, then the mind itself keeps doing the Simran. Whether you are talking to somebody or you are doing any other thing, the mind will continuously be doing Simran. तो जब मन से सुमरन का चलने लग जाता है तो हमारा रूहानी सफर स्टार्ट होता है और धीरे धीरे 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाता है और गुरु अंदर प्रकट हो जाता है। So once the mind starts doing Simran on its own, then our spiritual journey within begins and our withdrawal of the soul's attention starts. And when we leave the nine doors and come up to the eye center, the 10th door, there the master, the radiant form of the master is also manifested. इसीलिए थोड़ा दिन मन से जबरदस्ती करना पड़ता है। बाबा सोमनाथ महाराज ने भजन में लिखा है, जिद्दई करके सिद्धई होना, मन के हारे हार न जाना, जैसे सुरमा कामे काम, मेरो मन क्यों न भजे सतनाम। So Somnath Babaji has said that you have to be obstinate about your Simran, and you have to be stubborn about it and continue to do it. Like a brave soldier, he practices and he wins in the war by being stubborn about winning. Like that, we should fight our mind and we should be stubborn about it, and we will win over our mind. अगर इस तरह से हम मन के साथ सुमरन से मन को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लगन लगाएंगे, तो जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने किया है उन्होंने पाया है। हम भी करेंगे, हमें भी मिलेगा, हम भी अंदर जा सकते हैं। परमात्मा ने अपनी बात आपके अंदर रखी, आपके लिए रखी है। So if we are committed about doing our Simran and we are continuously at it, then definitely we will get progress and we will be successful on this spiritual journey. God Almighty is sitting within you. The path to go back also is within you. So if you do this and you are committed about it, you will definitely get success on your spiritual path. जब तक सुमरन नहीं पकेगा, हमारा भजन कभी बनेगा नहीं और मन सुमरन से लगेगा। So if you do not sit regularly and you are not committed about it, then you will not be able to develop that Simran. Your mind will constantly take you outside and will not allow you to do your meditation. इसीलिए चलते फिरते काम करते खाना खाते सुमरन की आदत बनाए रखें। सुमरन कोई भी हालत में करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। वो सब हमारे लेखे में जमा होता है और हमारे कर्म करते जाते हैं। So do your Simran throughout the day in your routine, when you're walking, when you're eating, drinking,
sitting, whenever you have the time you do your Simran. When you do this Simran, it is definitely accounted for within, and it is constantly reducing the burden of your karmas. So all of that is to your account. तो चाहिए कि हम भी अपने मन को सुमरन से जोड़ने की कोशिश करें और सुमरन को पकाने की कोशिश करें. जब सुमरन अपने आप चलेगा तो ही कामयाबी मिलेगी. So do your Simran regularly and continuously, and try to perfect your Simran. When your Simran is perfected and the mind starts doing it on its own, then your work is done. Then you will move on your spiritual path. वातावरण शांत है, सवेरे का समय है, हम सो के उठे होते हैं, मन शांत होता है. शांत मन ही भजन के लायक होता है. हमें इससे फायदा उठाना चाहिए. आंख बंद करके सुमरन और ध्यान दीजिए. The time is good and it is early morning. We have woken up. The mind is fresh. So a fresh mind is a quiet mind. Let's make the most of it. Let's close our eyes and sit for meditation.